Hello everyone. A very recent notification under Prevention of Money Laundering Act which was issued on 7th July 2023. In that particular notification only one line entry has been added and that one line entry is Goods and Service Tax Network. Now this particular entry has created lots of confusion among the taxpayers who are registered in GST. Now they are interpreting कि now GST also comes under PMLA. So all the offenses, penalties of PMLA will also be applicable to GST. But ऐसा कुछ भी नहीं है. Don't worry at all. It's try to understand what this notification says. This notification has been issued under Section 66 of Prevention of Money Laundering Act, and Section 66 says about passing of information from money laundering officer to anyone else. Try to understand. भाई मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो ऑथराइज्ड है, वो लोग किसको इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन उसके रिस्पेक्ट में. सो बिफोर दिस अमेंडमेंट देयर वर 25 एंट्रीज, मतलब 25 लोगों को वो लोग पास ऑन कर सकते थे. नाउ दे हैव एडेड वन मोर एंट्री, दैट इज GSTN, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. इट मीन्स व्हाट? Prevention of Money Laundering Act के officer can pass on information to GSTN for further investigation if any GST has been evaded or not. So on the basis of this information, proper officer under GST, they can initiate investigation and later on that can be converted into proceedings if they find that GST has been evaded. So try to understand, भाई PMLA में जो फंसे हुए हैं, जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही, उनकी इंफॉर्मेशन GST नेटवर्क में आ सकती है. It's not vice versa. As per this notification, it's not vice versa. इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि GSTN की इंफॉर्मेशन मनी लॉन्ड्रिंग के पास जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट टू एड ऑन वन मोर पॉइंट, ऐसा नहीं है कि यहाँ की कोई इंफॉर्मेशन वहां जा नहीं सकती. If you read section 158 of CGST Act, over there it's given wide power. It's a very wide scope where public servant under GST can pass on information to different authorities. और उस सेक्शन की ड्राफ्टिंग अगर आप पढ़ोगे तो इस तरह से कि no one can be left. It's a very wide scope. But the only thing is over there it is mentioned the public servant under GST. But now the question comes कि क्या GSTN public servant है? तो I feel ये एक litigated issue है, but with the plain reading it can be understood that GSTN is not a public servant under GST. GSTN public servant नहीं है, so definitely GSTN can't pass any information to Prevention of Money Laundering Act. But it's that कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन है, they can pass on to GSTN, and on that basis GST authorities, like in case of center there is DGGI, at state level especially in West Bengal there is BOI, Bureau of Investigation. They can initiate investigation for recovery of tax if any GST has been evaded. So there is unnecessary confusion among. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि GST और PMLA के प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. भाई GST itself contains very strict penal provisions अंडर सेक्शन 122. बहुत रिगरस पनिशमेंट भी है, प्लस फाइन्स एंड पेनल्टीज भी है. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के फाइन्स और पेनल्टीज विल बी नाउ एप्लीकेबल टू GST ऑफेंसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, थैंक यू सो मच.